Sonam, can you hear me? Hello, can you hear me? Is my voice clear? Yes. Okay. We'll start in 3 minutes, guys. Meanwhile, if you have any questions, let me know.
Okay, guys, let's start. Do you have any questions related to networking or any other topic which we have been covering till day? या नेटवर्किंग का पार्ट किसी को कुछ नहीं समझ में आया है? Other than natting, yesterday Vishal asked to repeat natting. We'll start with that. Other than that, anyone has any questions? Yes, guys, can you see me? Can you see my screen? Can you hear me? So we can start. Yes, it's audible. Okay. And no one has any questions as of now, right? Yes. Okay, let's proceed then. First, we'll discuss natting again. Vishal had a doubt with netting concept, so we'll start that and then we'll proceed with next topic. So netting is nothing. It's called network address translation. I'll write it down here. I'll just write it in one box, and it will be there on. Uh, so it's network address translation. Which address it translate? It translates your private IP to public IP. This is for outgoing request. For requests which are, or I'll say just outgoing request. And then it translates public to private for incoming requests. Ignore the spelling mistakes if there are any. And this happens at router level. It could be our home router जो हम लोग देखते हैं घर पे, या जो प्रोफेशनल राउटर्स होते हैं सिस्को वगैरह के, कोई भी राउटर हो सकता है, but it works at router level. Okay, I think my browser is not working fine. I'll show it to you in some time. Router वगैरह कैसे दिखता है, जो प्रोफेशनल सिस्को का राउटर है, we'll see that image. Meanwhile, let's continue with this. So what is it? This is network A. Network A, it could be anything. This is, as of now, we're discussing this as network A. It is a private network. It could be my house, my office, some cafe, or could be anything. Here, let's say we are using a range of 20.0.0.0 to let's take this one, 10.0.0 to 10.0.255, 5.255. Could someone tell me which range it is? Is it a private IP or public IP? Private. Yes, A. it is a right. It is a private IP class A. We'll read classes later, hence I did not mention class, but yes, that is a class A IP address and private IP address. Right. This is my network A, or let's call it network Pune. Similar things I have here. This is my office or my house or anything in Mumbai. It could be in same city, it could be anywhere. Okay. Another one I have, it's in, let's say, first one is in, this is in Pune Viman Nagar,
and then we have 1. So this could be either offices or net house or cafe or anything. Obvious thing that range, it could be same, it could be different. So let's say same range bhi hai, koi issue nahi hai isme, theek hai. But now understand one thing, these are segregated offices, hence they are able to use this. The same range they cannot use in the same office for two networks. एक ऑफिस में भी दो नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं, we'll see that कि एक ऑफिस में दो नेटवर्क क्यों बनाएंगे हम लोग, why would we need that, business requirement क्या होगा. The whole idea here of this class is to understand business requirement and give a technical solution to that. Azure में पूरा आपका learning ही उसी पे होगा, that you understand a business requirement, a business issue, a business problem, and you give a technical solution to that. Okay, so why would we need different IPs? We'll see that later. But the point is, we may require two networks in one office also. तो इसी office में same network जहाँ पर connected है, यहाँ पर और maybe यहाँ पर. This is in building A and this could be in building B, जहाँ पर हम लोगों को एक और network चाहिए होगा. Private network. Okay. So here I will not be able to use the same range. क्यों? क्योंकि same network में मैंने already इस IP को use कर लिया है. So this is not possible. This is not possible to have it in one office, one network, and use same IP range. But these are different offices. These guys don't even know to each other. ये किसी और का office है, ये किसी और का office है. So these guys can use the same range. Why? Because when we say private, तो वो private का ये जो है boundary इतनी ही है. This is what it is. ये जो है इसका private range हो गया. That's it. So if someone else is using same range, they can, because they do not know what other offices are using, and that is the logic behind it कि हाँ आप लोग इतने IPs use कर पा रहे हो. Otherwise हर office इसको कोई और repeat नहीं कर पाएगा, तो दूसरे office को दूसरा use करना पड़ेगा, तीसरे office को तीसरा, and then you will be left with 0 IPs to use. Is it clear till here? Yes. So when I said private IPs can talk to each other, and private and public cannot talk to each other. Before we move, let's say public क्या होता है, ठीक है, public IPs क्या होता है. प्राइवेट को तो हमने काफी देख लिया, public IP सिंपल कॉन्सेप्ट है इससे. प्राइवेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, पब्लिक बहुत ज्यादा सिंपल है. पब्लिक IP इज नथिंग. इट कैन बी यूज पब्लिकली. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये आपकी वेबसाइट्स पे होगा. कौन सी वेबसाइट? जो भी वेबसाइट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, फेसबुक, याहू, गूगल, यूट्यूब एटसेट्रा, जितने भी ये है वेबसाइट है, सब पे जो है पब्लिक IP यूज होगा. आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट, whatever, जहां पर भी वो लोगों को पब्लिक एक्सेस देना है, that people should use it over internet, वहां पर पब्लिक IP यूज होगा. This could be used over internet. Without internet यूज नहीं हो सकता है. On the other hand, this private network, forget ये जो मेरे पास राउटर है नहीं है, forget it. I can use it without internet also. A classic example is वो जो गेम खेलते हो आप लोग, काउंटर स्ट्राइक, उसमें भी नेटवर्क बनता है. ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड एंड यू डोंट इवन रिक्वायर एन इंटरनेट. यहाँ पर इंटरनेट का रिक्वायरमेंट तभी आता है व्हेन यू हैव टू गो आउट ऑफ योर नेटवर्क. लेट्स से नाउ यहाँ पर इतने IPs हैं एंड आई हैव दीज मेनी PCs, और इसमें मुझको 10.0.0.1 2 3 4 5 से लेके मैंने 55 255 इतने PCs बना रखे. सो टू communicate these PCs with each other, we do not require an internet. Is it clear till here, guys? Yes. Okay.
And now let's say one of these computers, this wants to talk to a public IP address. Then we require an internet. इसलिए public IP पे हमेशा हम लोगों को इंटरनेट चाहिए ही होता है. So it works over internet. Public IPs के कुछ ये है properties. We'll quickly read them. None of the IPs can repeated. Even private cannot be repeated, right? लेकिन प्राइवेट एक कंपनी में अलग प्राइवेट हो गया, दूसरी कंपनी में अलग प्राइवेट हो गया. इन दैट वे दोस कैन बी रिपीटेड, बट पब्लिक आईपी कैन नेवर बी रिपीटेड or can never be duplicated, I would say. So what do you mean by this? Now if I have this public IP, let this open and we'll try to ping Facebook or Yahoo and we'll get their public IP. First thing, now we look at this facebook.com or google.com. तो ये IP क्यों पिक्चर में आ रहा है? Anyone has any idea कि हम तो facebook.com यूज कर रहे हैं, तो public IP की यूज हो रहा है? Anyone who could explain that? That why are we using IPs? Why can't we simply use those names? I मतलब may यहाँ be पर तो wrong, yeah, please try. but I can try. Sure. Because Facebook internally is a private network, but when they want to come out as someone to connect with the other networks, they will have to have their own public IP, which other public IPs can communicate with. Okay, but my question is that why are we using IPs? Why not names directly? Like I remember facebook.com, using it facebook.com. So why am I using IP? Behind the scene IPs क्यों use हो रहे? जैसे मुझको नाम याद Logical है. way of expressing a address. Is it somehow connected to NATing, जिसमें Sorry, what was that, Joey? because my understanding is, I'm not sure whether ये सही है कि नहीं, but IP address इसके पीछे में आ रहा है. Is it something connected to NATing जिसमें translate हो रहा है? नहीं, forget it. NATing है या नहीं है, it is there. My question is that why are we dealing with IPs? Why not with names? Like I typed facebook.com. Why is it converting that facebook.com to IP? And why not directly resolve facebook.com? Why are we ultimately dealing with IPs? DNS resolving hostname to IP. DNS Yes, DNS server है. DNS is resolving this IP to name to IP, but why is it doing that? My question is, why can't I directly use facebook.com? ये तो facebook.com तो बस मुझको याद रखने के लिए बनाया है किसी ने, right? Because I cannot remember all these numbers. So my question is, why are we dealing with these numbers? इतना हम IP पे focus क्यों कर रहे हैं? Why can't we simply have names? It's facebook.com. इंटरनेट networks जो है बाइनरी वो IPs पे ही काम करता है, बाइनरी नंबर्स पे काम करता है. network Because communicate system करते हैं IP understand address binary से. language. Correct. Binary Exactly. language. Exactly. Because computer will never understand this language. Alphabets, right. Right. So we DNS will, भी पिक्चर में है ना सर? yes, we'll read DNS. A bit of that we'll read. थोड़ा बहुत उसको भी हम लोग पढ़ेंगे DNS को. But now do you understand कि इतना इसमें जरूरी क्यों है? Yes. So numbers, because computers they do not understand name. Computers जो है वो सिर्फ इसको binary language को ही ये होगा. Okay. And so human, at the backend, yes. so whatever numbers we are seeing in IP address at the backend, even they are not those numbers. They are converted to their binary values. So it actually does not matter if you put a character or a number. At the end, it is going to be converted into some binary format when computer wants to understand it. So what I feel why this is why we are working on that, because IP itself is internet protocol. That is, it has certain rules, and that rules allow only to connect a computer through a network using IP addresses which are of a particular format, let it be V4 or V6, and that is why they can only communicate with that. So protocol is basically a set of rules which are laid down, by the inventor, and that's why we are following that. So as we see, as you said earlier, V6 is also coming, right? And V6 is a hexadecimal thing. So they're changing. They would be using some other protocol later in
in time, right? Yes, guys, just give me a minute. Yeah, sorry about that. Right, so I hope it is clear to all of you now, as Chetan explained in detail, that why are we using IPs. I just wanted to make that clear कि हम लोग इतना IP पे focus क्यों कर रहे हैं, because computers, they will not understand your own language, our language, that I simply type facebook.com और वहां पर Facebook चल जाए, that will not happen, right? We will require IPs. यहाँ पर भी same computer names भी है. Now if I check my computer name, this is my computer name, but when I have to take RDP वगैरह कुछ ऐसा लेना है मुझको, तो उसमें भी IP ही लगेगा मुझको. See, this is my computer name, but when I take RDP, ऑफिस में I'm sure आप सब लोगों ने RDP थोड़ा बहुत यूज किया होगा, जिससे आप लोग दूसरे कंप्यूटर का रिमोट ले सकते हो. Okay. So when you use RDP system here, and when I type here my computer name like this, remote लेने के लिए, I hope many of you know what RDP is. Right? So when we do this at the back end, जो है इसका IP ही use होने वाला है. Just because I'm typing a name, that does not mean वो name से resolve कर रहा है, name से जो connectivity कर रहा है. So for connectivity between computers, between websites, and whatever is there on the network, we will require IP addresses. Is it clear? Yes. Okay. And public IP, it cannot be duplicated, क्योंकि उसमें कोई ऐसा segregated network होता ही नहीं. जैसे private में है कि एक range हम एक कंपनी ने यूज कर ली, and that is a closed network. Same range किसी और कंपनी ने क्लोज कर लिया और दोनों अलग अलग आइसोलेशन में डील कर रहे हैं, that will never happen in public IP. So public IP में जो है हमेशा एड्रेस एक बार किसी ने यूज कर लिया, like we were checking Facebook, we could check google.com. तो अब ये जो IP है 142.250.67.142, गूगल ने मे भी इसको कुछ टाइम के लिए रेंट पे लिया हो, बट गूगल एंड फेसबुक ये लोग परचेज कर लेते हैं. दीज पीपल डू नॉट डील विद रेंटिंग. वी विल सी के रेंट पे कैसे लेते हैं IP व्हेन वी डील विद वर्चुअल मशीन्स इन Azure. बट ये IP एक बार गूगल ने ले लिया, सो दिस IP कैन नेवर बी रिपीटेड. अब इस IP को जब तक google.com यूज कर रहा है, फेसबुक और याहू और एनी अदर IP कोई भी इसको कभी भी यूज नहीं कर सकता है. इज इट क्लियर? Yes. सो पब्लिक IP थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजी है. इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पर रिपीट हो सकता है, वहां पर रिपीट हो सकता है. एक बार पब्लिक IP कहीं पर आ गया, एंड दैट्स ऑल, यू कैन नॉट रिपीट इट. नाउ इफ आई पिंग टू दिस IP डायरेक्टली, नाउ आई वाज पिंगिंग. बाय द वे, पिंग इज अ प्रोटोकॉल टू चेक कनेक्टिविटी. पिंग से मतलब सिर्फ ये है कि वो चेक कर रहा है फेसबुक से कनेक्टिविटी है या नहीं. द मोमेंट आई टाइप पिंग google.com, इसका मतलब हुआ कि वो google.com की वेबसाइट को टच करके आ गया या चेक करके आ गया कि कनेक्टिविटी है या नहीं. एंड इफ वी आर गेटिंग रिप्लाईज लाइक दिस, जहां पर सेंड फॉर, रिसीव फॉर एंड जीरो लॉस है, इसका मतलब कनेक्टिविटी है. अगर आपको चेक करना है कि कनेक्टिविटी नहीं होती तो कैसा दिखता, तो लेट्स सी. दिस इज माय वेबसाइट, जिसका अभी फिलहाल मैंने कोई IP ये नहीं कर रखा, असाइन नहीं कर रखा. दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड इफ यू वांट टू सी कि कोई वेबसाइट ऐसा हो जिसपे IP एड्रेस लगा हुआ भी है बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, तो वहां पर ये फेल आ जाएगा एंड 100% लॉस आ जाएगा. So that is why we use ping. Now my question was, I am pinging here google.com, तो मुझको Google का IP मिल गया, right? Now if I ping this IP directly, will it work? If I ping this IP directly, will it work? It should. Yes. Yes. Okay, let's try. Let me see if my browser is working. Yeah, luckily it is working now. So now if I type this IP address directly here, will I see Google page? Will I see google.com? Let's not waste time and see. Yes, I'll see. Obviously I will see. Why? Because ये Google वगैरह ये जो है ये सब, this is only for human understanding. This has nothing to do with computer language. We will not be able to remember each and every IP address. Facebook, Yahoo, YouTube वगैरह इतने कितने IP addresses याद रखोगे आप, right? See how many services we use here. कितने IPs आप लोग याद रखोगे? It is not possible to remember all these IPs. So what they have given, they have just given a name, but behind the name, what works is IP address, because computer understand IP language. And a basic example of this is your telephone directory in your phone. That it is easier for us to remember names. Under the name, we have numbers. When you dial something, when you save a name, a friend, father, mother, you search that name, mother, and you click on that. Call gets connected.
but backend में क्या connect हो रहा है? Numbers. So that is the classic example of this. And इसमें थोड़ा बहुत DNS का concept है. We'll see that when we come to DNS topic. But is it clear now that why are we talking about IPs? Why are we discussing IPs? And why not names directly? Because computers, they required a binary language. They cannot understand this facebook.com wala language. They cannot understand. Okay. So coming back to here now, I was explaining कि private network में किसी को if these PCs will have to talk to each other, they will not require an internet. Internet कब चाहिए होगा? When one of these PCs, this PC if decides to go and talk to internet. Internet पे क्या हो सकता है? कुछ भी. Let's say this PC wants to talk to facebook.com. facebook.com कहाँ पर है? It is on internet. It is with a public IP and it is on internet. Okay. It is on public IP and it is on internet. So now this private IP can it communicate with this public IP directly? Can we do that? No. Then what can be done? Now I have to talk to them. I will have to do something about it. So what We could need be the a option? network address translator. Exactly. So here it comes the router and NATing. It's not necessary कि सिर्फ router से ही हो. NATing के लिए कुछ और device भी हो सकता है. But as of now, we are talking about routers. So these are the routers which we use at our home. Basic routers, इसमें भी NATing होती है. ठीक है. And now what we are using, it is obviously through NATing, because I am sitting in my house with a private IP address. If you guys check my IP address, by the way, ipconfig is the command to check IP address. So if you check 192.168.1.108, which range it is, can anyone tell me? Is it a public range or private range? Private C. Classic. Private C. Exactly. It is a private range and class C. Classes we'll see later. जिसको नहीं समझ में आ रहा है classes, that is fine. But कल के picture में classes भी दी हुई थी. So using my private IP, I'm connected to you guys. I'm showing something, I'm presenting something, and you are able to see it. And now if you guys check your own IP, we did that yesterday already. Still you want to do, you can check that. So you will have a private IP. It could be same range, different range, doesn't matter. But still we are able to communicate. So how is it happening? It is happening through routers NATing feature. जो actual में router use होता है, I'll just show it to you guys. Sorry. So these are the routers which we use in our offices. घर के router अलग होते हैं और ये router जो है ये काफी costly भी होते हैं. 2-3 लाख रुपए के हो गए मे बी इनके जो लेटेस्ट मॉडल है. दिस इज एन ओल्ड मॉडल. ये स्टिल ये भी 1-1.5 लाख रुपए का होगा. ठीक है. सो बहुत सारे फीचर्स करता है राउटर. बट जस्ट टू explain it to you that you have plenty of servers, plenty of users and computers in your private network. But when that private network, someone from that private network wants to communicate with someone in other network, they will have to go through your internet network. Private network से internet network पे निकल रहे हो, so you will require a public IP. So in my case, what is my public IP? So this is my public IP, 103.275.166. This is my public IP. So I am communicating with you guys. This is my IP, private IP. The request is coming. जो भी request, जिस भी तरह की connectivity request, it is coming from here. यहाँ पर ये NAT हो रहा है. यहाँ पर एक पैकेज बनेगा जहाँ पे ट्रांसलेट होगा. मेरा प्राइवेट IP के ऊपर जो है एक पब्लिक IP का ये लग जाएगा, पैकेट लग जाएगा. एंड देन दिस रिक्वेस्ट विल गो to you guys. जहां पर भी आपका पब्लिक आईपी है वहां पर पब्लिक आईपी टू पब्लिक आईपी दे विल कम्युनिकेट. यहाँ पर आपका प्राइवेट होगा आईपी एंड देन दिस रिक्वेस्ट विल गो टू you guys. और जिस भी तरह का हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा. एंड व्हेन रिक्वेस्ट इज कमिंग बैक, व्हेन लेट्स से someone one of you is texting here, that is also a transaction, that is also a data transfer. या आप में से कोई रिक्वेस्ट शेयर कर रहा है, द सेम थिंग विल हैपन. आपका प्राइवेट जो है यहाँ पर नेटिंग होगा, यहाँ पर एक पब्लिक आईपी हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पब्लिक आईपी तक आएगा एंड देन यहाँ से वापस आते वक्त वो अगेन मेरे इस प्राइवेट एड्रेस पे उसको ये कर लेगा. व्हाई इज इट डूइंग? क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू नाउ हियर.
because it's not only one PC, right? यहाँ पर भी मल्टीपल पीसीज एटलीस्ट इस रेंज में भी जो है 255 into 5 कर लो आप लोग, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 700,000 पीसीज इसमें आ सकते हैं इस रेंज में, राइट? तो इसमें भी 1000 पीसीज है। तो रिक्वेस्ट अगर आता है, लेट्स से facebook.com को किसी ने रिक्वेस्ट किया है, दिस पीसी हैज रिक्वेस्टेड facebook.com, नेटिंग में इसका यहाँ पर ये सब हो गया, प्राइवेट टू पब्लिक हो गया, ठीक है, यहाँ पर पब्लिक आईपी लग गया, नाउ इट कैन कम्युनिकेट टू फेसबुक। बट फेसबुक जब रिप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी किसको? यहाँ तो 1000 पीसीज है, इसलिए इस पैकेट में दोनों आईपीस का होना जरूरी है, दैट योर पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी जहां से रिक्वेस्ट शुरू हुई है। सो बोथ आईपीस आर रिक्वायर्ड। सो व्हेन अ रिक्वेस्ट कम्स बैक, रिक्वेस्ट कम बैक का मतलब क्या होता है? आई विल क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू, बहुत सिंपल ये है वो, in case you guys are getting confused. If I'm typing this facebook.com or let's say Yahoo, so this is I'm requesting, and the moment I see this page appearing here, ये जो पेज आ गया ये हुआ रिक्वेस्ट का वापस आना, that's all. यहाँ पर इतना ही ट्रांजैक्शन हुआ. So first I communicated with Yahoo by typing yahoo.com and then Yahoo communicated with me by showing this yahoo.com का page. Is it clear, guys? Yes. Yes. Yeah. Right, so if I had plenty of computer, in fact to my router now, I think my laptop, my mobile, my mom's phone, and there are plenty, at least 9 devices are connected to my laptop, to my router, and router will have only one IP address. IP address एक ही होता है आपके पूरे environment में, IP address जो है वो एक ही होता है, मतलब हमारे environment की बात कर रहा हूँ मैं. It is not necessary कि एक ही होगा, जहां पर आप multiple websites use करें, you could have multiple. नेटिंग वाले इसमें एक ही आईपी एड्रेस होगा जिससे ट्रांसलेशन हो रहा है. तो मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए एक ही पब्लिक आईपी इज सफिशिएंट. सो द रिक्वेस्ट गोज फ्रॉम दैट प्राइवेट आईपी एड्रेस, it gets translated here, which is called network address translation. यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी, let's say 10.0.0.1 1 से एक रिक्वेस्ट आएगी facebook.com के लिए. it will come here, यहाँ पर मेरे राउटर पे इसका ट्रांसलेशन होगा जिसमें दोनों भी आईपीस हो गए, बट बाहर वो सिर्फ पब्लिक आईपी शो करेगा. क्यों? क्योंकि facebook.com has a public IP and facebook.com has a public IP and it can communicate only with a public IP. So it will show its own public IP, its PIP, public IP. Facebook से communicate करेगा, Facebook will reply and then यहाँ पर आके ये फिर से ट्रांसलेशन करेगा because it has to reply to the same computer. यहाँ पर तो 1000 कंप्यूटर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि Facebook रिक्वेस्ट इसने किया था और खुल किसी और के पेज पे गया किसी और. दैट शुड नॉट हैपन. इसलिए वो यहाँ पर सेम इसी आईपी एड्रेस को भेज देगा. सो दिस इज कॉल्ड नेटिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. इज इट क्लियर गाइस? क्वेश्चन है. यस. अभी जैसे ये नेटिंग कर रहा है राउटर हमारा, लेकिन राउटर के पास भी तो खुद का एक ये है ना आईपी एड्रेस, तो वो यूज नहीं हो रहा है. व्हिच आईपी एड्रेस? अपने राउटर पे भी Public तो or एक private? आईपी लगा हुआ है ना. राउटर पे प्राइवेट आईपी है, राइट? Router will have Router both पे- IPs. Unless router has a public, that is the beauty of router. अगर राउटर के हाँ. पास आपकी रेंज का प्राइवेट आईपी नहीं होगा इस रेंज का, will he be able to communicate, will this router be able to communicate with your devices? नहीं. तो राउटर के पास एक प्राइवेट रेंज होगा जो आपकी रेंज से कम्युनिकेट करने के लिए ये होगा, feasible होगा, ताकि the router should be able to talk, and router will have a public IP, so the router can talk to public IPs. Okay. Router will always have two IPs, public and Okay. private. In fact, any device which is capable of doing netting will have two IP addresses. Those से मेरा मतलब not only two IP addresses, two types of IP addresses. We could have multiple IP addresses. Router पे हम 4 public IP भी रख सकते हैं और multiple private भी रख सकते हैं, but two types of IP. So your computer, it could either have public or private at a time. ऐसा नहीं कि आपके कंप्यूटर पर पब्लिक आईपी नहीं आ सकता डायरेक्टली. You could use public IP directly on your computer also, but not both of them, either public or private, one at a time. Okay. ठीक है? हाँ भाई. So now next question is, ये तो हो गया facebook.com के लिए. Now what if this office wants to talk to this office? Why are we using router? यहाँ पर भी प्राइवेट है और यहाँ पर भी प्राइवेट है. So can they talk to each other directly or will they have to go via router's path? What do you think, guys? They have to go via router. And why? Both are in private.
Why not? So they are in separate space. Exactly, Distance. because they are not connected to each other. कनेक्टिविटी के लिए आई टोल्ड यू कहीं ना कहीं कोई केबल्स चाहिए, नो मैटर कितना हम वाईफाई बात कर ले कुछ भी कर ले, बैकएंड में केबल्स है, राइट? सो इन केस इफ दीज ऑफिस वर कनेक्टेड टू सम केबल, किसी केबल से कनेक्टेड होते तो डायरेक्ट बात कर लेते, मे बी वो आईपी का रेंज वगैरह उनको देखना पड़ता, वो सब करना पड़ता, बट दे will be able to talk to each other if they are connected to each other some using some cable या किसी भी तरह से अगर कनेक्टिविटी है तो। अगर इनकी अपनी कनेक्टिविटी नहीं है तो which connectivity are they using, किस पे डिपेंडेंसी है इनकी? ओवर द इंटरनेट इंटरनेट का जो केबल बिछा हुआ है पूरा उस पे डिपेंडेंसी है, राइट? सो Yes, टू यूज yes. इंटरनेट डिपेंडेंसी, टू यूज इंटरनेट नेटवर्क, व्हाट डू वी नीड? a public IP. तो इनको भी एक public IP चाहिए होगा as a face to this network, or for this network will also require a public IP as a face, and these two will talk to each other, or what again translation वगैरह होगा. So even if these PCs can talk, want to talk to each other, they will have to take this route and they will have to do this translation. So is it clear? Is NATing clear, Vishal and others जिसको भी जो भी doubt था? Yes, a very simple question, like for a mobile device, Yes. every time we are connected to network, our network provider is providing us a public IP, right? That depends. If your mobile is connected to your SIM card, via your Yes. SIM card, then you have you will still have a private IP. आपका जो Yes. पूरा नेटवर्क का let's say एयरटेल और जियो है, somewhere they will have one public IP. They are doing a translation. हर मोबाइल को अगर वो एक पब्लिक IP असाइन करेंगे तो खत्म हो जाएगा पब्लिक IP. आप लोगों को प्राइवेट IP ही अच्छा, होगा. so they will be sharing a public IP with many devices. Yes, yes. And Okay. if you are using Wi-Fi, तो आपका Wi-Fi जो है तो आपके राउटर की रेंज में, let's say यहाँ पर मेरे इतने PCs है, यहाँ पर मैं एक मोबाइल भी कनेक्ट कर लूँ तो इसी रेंज में से इसको एक आईपी मिल जाएगा, इसी रेंज में से एक आईपी मोबाइल को मिल जाएगा. यू Okay, कैन so ट्राई what दिस. about our like Airtel router? We are having Wi-Fi router. So it has its own private IP. Then the network provider, the Airtel, is providing a separate public IP or to the router, or how? That completely depends on your ISP, how it works. But only thing you will have to Okay. understand here, that request goes from a private and it gets converted to public, and that is what Okay, called okay. NATing. Now वो यहाँ पर आपके Okay. घर के राउटर पे हो, that your ISP can do, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्लान हेवी बेचते हैं वो लोग, ताकि वो आपके राउटर पे एक डेडिकेटेड आईपी दे दे. अदरवाइज व्हाट कैन हैपन, दिस रिक्वेस्ट कैन गो फ्रॉम हियर इन योर केस, द एग्जांपल व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ से भी ये जाएगा रिक्वेस्ट कहीं पर और, जहाँ पे 10-12 लोगों को मिलाकर एक राउटर आपके आईएसपी ने लगाया होगा. यू वोंट इवन नो अबाउट दैट, यू वोंट इवन सी दैट. यहाँ पर एक राउटर होगा और यहाँ से नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा. तो ये पूरा ट्रांसलेशन यहाँ से होगा, रिक्वेस्ट विल कम बैक हियर, यहाँ से वो फिर यहाँ पर जाएगी, एंड देन यहाँ से यहाँ पर जाएगी. Okay, got it. यहाँ पर हो सकता है मे बी इससे लार्जर स्केल पे यहाँ पर एक बड़ा सा राउटर लगा रखा है और वो सारे रिक्वेस्ट को यहाँ से केटर कर रहा है. सो इट डजंट मैटर कितने हॉपिंग ये है, बट अल्टीमेटली वही होना है. It is up to you now. If you are paying for a higher plan, and if you have taken a dedicated public IP, so it could happen here also. Your home router, it is capable of doing that. It is just a matter of कि public IP कितने use हो रहे हैं, कितने public IP. अगर आपने public IP के लिए पे कर रखा है, you are paying 3,000-4,000 a month for a public IP, that process can happen here. यहीं पर हो सकता है और आपको अपना public IP हमेशा सेम रहेगा. If you are not paying that, आपका कोई छोटा ISP वगैरह है तो वो जो है थोड़ा एक मिड रेंज का आईएसपी है, लेट्स से आईसीसी वगैरह, उनका एक अपना पब्लिक आईपी वगैरह होगा. एक हो सकता है, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं. नाउ डिपेंड्स के कितने लोगों को उनको रिक्वेस्ट कैटर करवाना है. यहाँ पर हो सकता है नेटिंग, यहाँ पर होगी. कोई बहुत बड़ा है तो दे कैन डू इट एट देयर एंड कि ठीक है, लेट ऑल रिक्वेस्ट कम टू आवर सर्वर्स, टू आवर नेटवर्क, एंड देन वी विल डू द नेटिंग. बट it doesn't matter where is it happening, NATing will